Hi guys, this is Shelly. Again, I'm here with a new variety of painting that is going to be a texture painting, but this time the technique is going to be very different. So you must have seen my other videos in which I have taught you that how to make a textured flower tree painting, right? And now this is going to be another kind of painting and another kind of technique in which I'm going to make a tree again, but the technique will be quite different and it is going to be very easy for you. So it's not very much time taking and I'm going to use this old canvas this time, right? So you can see the video and enjoy it. Yes, before that I would like to tell you that I'm gonna use this texture for this and I'm gonna use acrylic colors. What are the acrylic colors? Acrylic colors is a medium in which you can feel a plastic sense, right? It is very shiny and it looks really beautiful. It gets very dried very earlier than the oil colors. Oil colors take lots of time to dry, but acrylic dries within 1 minute or 2 minutes, right? So you can just see this video and learn how I have used the acrylic color with the texture. Yes, one more thing I would like to tell you that texture is a something in which you have to wait, right? So what I will do, I will just wait for at least 6 hours to dry my texture and then I'm gonna use my acrylic colors to paint it. So let's get started.
गाइस, तो मैं अब दिखाने जा रही हूँ आपको टेक्सचर, कैनवस के ऊपर टेक्सचर कैसे आया है और कलर करने के बाद टेक्सचर कैसा लग रहा है, ये देखिए। आई होप आप देख पा रहे हैं कि टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। ये टेक्सचर टूर है आपके लिए मेरी कैनवस पेंटिंग का। इट्स लुकिंग सो प्रिटी। मुझे टेक्सचर पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे अच्छा लगता है और मैं इसमें ही एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। सो इट इज़ माई स्टाइल नाउ डेज दैट आई एम वर्किंग अपॉन दीज टेक्सचर पेंटिंग्स and this is basically for my client. So I have made this painting already and now that one is sold, so I have to create this painting again. तो आप टोटल देख सकते हैं पूरा एरिया की किस तरीके से ये पेंटिंग दिख रही है। चलिए, इसमें मैं अब ऑब्जेक्ट जो है, मेन ऑब्जेक्ट ट्री है, तो मैं वो ड्रॉ करूँगी। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको टेक्सचर, है ना? इट्स लुकिंग वेरी नाइस। तो चलिए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। मैं ड्रॉ करने के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी, ठीक है? तो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इन द मिडल ऑफ दिस कैनवस। दिस इज़ अ क्लॉथ, आई हैव यूज्ड अ कैनवस क्लॉथ, ठीक है? तो मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ।